Darcy with me on Bollywood Now. Arshad, आप Finally the Arshad Wari, somebody's come. अर्शद, तो आपको कैसा लग रहा है बॉलीवुड ये घंटा अवार्ड्स में आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I completely enjoyed. I think like I was saying outside, I said we really lack humor in our country, and let me tell you that the man who got us our freedom, Mahatma Gandhi, was the guy who said that I would have died if I didn't have a sense of humor. So I think humor is your lifeline next to oxygen, and you must utilize it big time. And the people who encourage it, you have to encourage them. So according to you, worst film of 2014? I think you've made a dartboard of them. Actually, I haven't seen most of them, but I think यहाँ पे इतनी जगह नहीं उतनी खराब पिक्चर लगाने के लिए. But I think Hamshakal was pretty bad. And worst song according to you of 2014? I haven't heard much. Not heard, really. Honestly, I would have said it otherwise. I don't know. Okay, Arshad, quick emoticons reaction we want from you. How do you feel today? Okay, so one fine morning you wake up and you turn to be Rakhi Sawant. Then what will be your I'll reaction? commit suicide. That's what I'll do. Thank you so much, Pleasure, Arshad. pleasure. So with me is the very gorgeous Minnie Mathur. Minnie, you look amazing today. Thank you. I dressed up. Okay, so आप घंटा अवार्ड्स में आए हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि बेस्ट पार्ट अबाउट घंटा अवार्ड्स. I think it's good to laugh at yourself. It's good to laugh at people and be objective about things that may not be as good as we ought to have made it. So despite the fact that my husband's a director, I think it's great to be able to laugh at yourself. And I've been attending the Ghanta Awards for the last many years. I mean, whatever, they've only had two, and I've been attending it, and I will continue to. Also, I'm a big fan of the East India Company, and all the boys are really good at their work. I'm a big fan of stand-up, Indian or international. So I don't pass any show that is something like this. I think our country really lacks the humor culture, and So according to you, the worst film of 2014? that I leave up to these boys to. I'm not here in judgment on all the films. I'm here to have a good laugh along with them, but I'm not here to criticize, judge, or side with anyone. So with me is Parmeet. Parmeet, सबसे पहले ये बताइए, आपने फर्स्ट हाफ देख लिया है घंटा अवार्ड्स का, कैसा लगा आपको? अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू, अब आप बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू वर्स्ट फिल्म ऑफ 2014 कौन सी है? मैंने actually I think Hamshakals is probably the worst film ever if I'm right. And worst song of 2014 कौन सी है? Worst song of 2014. Song I really can't say. It's a tough one, but I don't listen to Hindi songs too much, so I'm the wrong person to ask. अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ आप एक सुबह उठे हैं and you turn out to be राखी सावंत, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? You were to act in a film जिसमें आपको ब्रोमांस करना है हिमेश रेशमिया के साथ, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? Anything you would want to say about the Ghanta Awards? I think it's one of the most entertaining shows that I've ever been a part of. I've been coming here, I think this is the third year in a row, and इतना fun किसी भी और show में नहीं मुझे मिलता. I've been to many shows and many places, and there are a lot of Bollywood awards, but this award takes the cake completely. It's brilliant. The concept is brilliant, and the way they do it is brilliant. They're fearless. That's wonderful. They should be, and it's hats off to Shruti and everybody. The way they go about so brilliantly presenting everything on stage. Brilliant. I just love it. Thank you, Parmeet. Thank you. मेरे साथ अभी मौजूद है अर्चना, जो लोगों को हमेशा कैमरे पे हंसाती है. आपको कैसा लग रहा है घंटा अवार्ड्स में आकर? हाँ, सुपर्ब. इतना मैं कॉमेडी सर्कस के बाद अगर कभी हंसी हूँ तो आज. अच्छा, तो बेस्ट पार्ट घंटा अवार्ड्स का अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है वो? आई थिंक ऑल दी अवार्ड्स जिसको देते हैं तो मतलब वो लोग तो बेचारे क्रिंज करते होंगे, लेकिन ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है. तो
आपके हिसाब से 2014 की वर्स्ट फिल्म कौन सी है? मैं पता फिल्में देखती नहीं, इसलिए मुझे आधी जो नॉमिनेशन है मुझे समझ नहीं आता कि क्यों। सुना है कि ये ख़राब थी, वो ख़राब थी, लेकिन मैं देखती नहीं, तो मुझे मैं कह ही नहीं सकती कि मुझे तो नॉमिनेशन ये भी नहीं पता मुझे। आई डोंट वॉच फिल्म, सैड। अच्छा, अगर आप वन फाइन मॉर्निंग जागती हैं और आप KRK बन के जागती हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं KRK बन के अगर जाऊँ, जागू अगर इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आप KRK बन गई हैं। अच्छा, आपको एक फिल्म में एक्टिंग करने का मौका दिया गया है और आपको किसिंग सीन दिया गया है हिमेश रेशमिया के साथ, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अच्छा, आपने हमशक्ल्स देखी है? नहीं। मैं वही पूछने वाली थी, अगर आपको हमशक्ल्स 2 में साजिद खान ने आपको रोल ऑफर किया है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? और मैड कॉमेडी बैड कॉमेडी नहीं है ज़रूरी। आई थिंक आई कैन मेक एनी कॉमेडी गुड, सो आई डू इट।